So hello guys, welcome to my channel guys. So I happy Diwali to all of you from me. So आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि गिटहब पे अपने प्रोजेक्ट किस तरह से अपलोड कर सकते हैं। तो सिंपल है, हमें इसके लिए सबसे पहले क्रोम ब्राउजर पे जाना होगा। देन लॉग इन टू आवर गिटहब अकाउंट। मेरा ऑलरेडी लॉगिन है। देन क्लिक ऑन प्रोफाइल्स। Then click on the repositories. And then create a new repository. Then click on new. Then give the name to your repository. हमारा प्रोजेक्ट जिस तरह का उस रिलेटेड नाम दे देंगे। जैसे हमारा एज कैलकुलेटर का प्रोजेक्ट है तो हम इसे नाम देते हैं। सी लैंग्वेज का इसलिए सी लाइन एज कैलकुलेटर। देन डिस्क्रिप्शन आपको अगर देना हो तो आप दे सकते हैं, ये ऑप्शनल है। देन पब्लिक एड अ रेडमी फाइल। देन क्रिएट अ रिपोजिटरी। Then click on add files. Then upload file. Then हमारी फाइल्स अपलोड करनी पड़ेगी प्रोजेक्ट की। Go to the file location. Then click on file and drag here to upload. Then save and commit the changes. Then हमारी फाइल सेव हो रही है। Then closing this and click on our readme. Then click on edit. Then यहाँ हम हमारे प्रोजेक्ट का आउटपुट डाल देंगे। यहाँ से कॉपी कर लेंगे। Then paste here. नीचे प्री कमांड डाल, ये सिस्टमेटिक लिखना चाहिए प्रीव्यू में। देखिए गाइस हमारा एज कैलकुलेटर बस हो गया गाइस। अब सेव एंड कमिट द चेंजेस। हमारा प्रोजेक्ट गिटहब पे सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है।
then you can see that in your repository. देखिएगा एज कैलकुलेटर, ये तरह से आप अपने सारे प्रोजेक्ट्स गिटहब पे इजीली अपलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस गाइस। इसी तरह की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।